Today I am traveling to a pilgrimage named Guruvayoor here in Kerala. Actually plans था कि मैं श्रीनाथ के साथ आऊँगा. मैं श्रीनाथ और विनोद मेरा जीजा जी, you guys have seen him. हम तीनों का आने का प्लान था यहाँ पे. It's me, Vinod, hi, and a very new member in the family. That's KD and he's new to the vlog. So we three are traveling to Guruvayoor right now. We are on the way. में जो दर्शन करना था वो हो गया है. मुझे जो शयन प्रदर्शनम करना था, शयन प्रदर्शन मतलब मंदिर के सामने से, मंदिर काफ़ी बड़ा है तो मंदिर के सामने लेटना होता है, लेट के गोल गोल घूम के जाना होता है, मंदिर का पूरा एक चक्कर लगाना होता है. मुझे वो एक राउंड करना था, मैंने वो किया. ओके, सो वी आर डन विद लंच एंड वी आर हेडिंग टू आनाकोट्टाई. आनाकोट्टाई का इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो देयर आर अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स. यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स. दे विल बी रेस्टिंग, क्योंकि ऐसे मंदिर में सारे एलिफेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. एलिफेंट्स का होना भी ज़रूरी होता है क्योंकि भगवान का एक अवतार होता है बोलते हैं. तो उस हिसाब से जितने भी हाथी यहाँ पे आते हैं उनको एक शेड वगैरह बना के रखते हैं, वहाँ पे वो लोग रेस्ट करते हैं. तो वहाँ पे हम लोग इसके बाद अभी यहाँ से वही जा रहे हैं. So we need to buy tickets before we enter. 50 rupees per head for adults and 20 rupees for kids. बाकी सब जगह पे इतने चार्जेस नहीं होते और फोन्स के लिए कोई चार्ज नहीं करता है, बट यहाँ पे हाथी का स्विमिंग पूल है. हाथी का स्विमिंग पूल है. तो ऐसे फ़ोन्स के लिए कोई चार्ज नहीं करता है, बट यहाँ पे फ़ोन्स के लिए 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं. नॉट अ बिग डील, बट चलता है. क्या करें. हाँ, 100 रुपीज़. ठीक है, 100 रुपया. ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയാണിത്. ഇവിടെ 48 ആനകളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. അതിൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആനയാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആനകളെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരാറുള്ളത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആനയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ. തിരിച്ച് ആനയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഇതാണ് ഗുരു. ബാക്കിയുള്ള ആനകളെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് വഴിയായിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ആനയെ നമ്മൾ ചട്ടം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. ट्रांसलेशन इन हिंदी इसकी यहाँ पे 48 एलिफेंट्स है. सबसे फेमस है गुरुवायूर पद्मनाभन बोल के एक एलिफेंट है. वो सबसे ज़्यादा फेमस है. यहाँ के सारे प्रोग्राम्स में उसको यूज़ किया जाता है. दैट इज व्हाट इज सेड इन मलयालम एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे खुद को नहीं समझा.
अगर आप लोगों को नहीं पता कि एलिफेंट, अभी जो एलिफेंट आपने देखा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसके यहाँ से वो पस क्यों निकल रहा है, दैट इज़ बिकॉज क्या बोलते हैं उसको, मस्त बोलते हैं मलयालम में, मदम पोट्टल बोलते हैं। इन सिंपल हिंदी वर्ड, जब एलिफेंट का हट जाता है और वो सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देता है, सबको मारता है, ऑल दैट हैपन्स आफ्टर दैट। तो यहाँ से और ये साइड से पस निकलना शुरू होता है व्हेन दैट इज़ कम्प्लीटली, हाँ, एंड व्हेन दैट इज़ कम्प्लीटली ओवर, वो दैट टेक्स अराउंड 30-35 डेज। उसके बाद हाथी वापस कम्स डाउन टू नॉर्मल, उसका जो दिमाग हटा हुआ रहता है कम हो जाता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। गुड टू नो स्टफ। ये वाला हाथी थोड़ा उम्र में छोटा है अपने ऊपर ही मिट्टी फेंक रहे हो। ही मस्ट बी अ ईयर ओल्ड, आई गेस, ईयर और 2 मैक्स। खुजली हो रहा है उसको। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, प्लीज़ यू हैव टू गो टू दिस प्लेस फॉर श्योर। बहुत अच्छी जगह है, नथिंग न्यू और यूनिक अबाउट दिस प्लेस, बट जो भी है इट इज़ गुड। बट आके एक बार विजिट करना ज़रूरी है, प्लीज़। इफ यू गाइस हैपन टू कम टू Kerala, you have to come to this place. And it's a girl. She's very cute though. I think we have another vlogger here. This guy. And this one just said hi when I said hi. हाथी के ऊपर कभी कोई टाइम लैप्स नहीं लिया, तो इट लुक्स सो फनी एंड क्यूट। लेट्स सी। बहुत क्यूट था ना। सो ये जगह के लिए बस इतना ही। हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी हाथियों को काफ़ी दूर खड़े किए, क्योंकि इधर दे आर डेंजरस टू ह्यूमंस, जो नहीं हो सकता है कभी भी, और एल्स उनका वो दिमाग हटा हुआ रहता है, वो सब कोई सामने जाएगा तो मे बी दे माइट अटैक। इट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अगर उनका दिमाग खराब होता भी है तो इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। एनीवेज, काफ़ी दूर खड़े किए थे तो हम लोग उनके नज़दीक नहीं जा पाए, लेकिन जितना हो सकता वी कवर्ड दिस प्लेस। आई होप यू लाइक्ड दिस पार्ट ऑफ टुडेज व्लॉग। नेक्स्ट we don't know what we're gonna do. ये जगह का एक्सप्लोरिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग इसके बाद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं। अब हमको അടപ്പൊരു വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങാം. എവിടെ? വണ്ടിയിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. तो जैसे मुंबई में होता है जीरा सोडा, वैसे यहाँ पे होता है सोडा शरबत, एंड इट इज़ अमेजिंग। हमें बहुत देर से प्यास लगी है, हम रास्ता क्रॉस करके जा रहे हैं सोडा शरबत पीने के लिए। रुक जा, गाड़ी आ रहा है। हाँ, सोडा शरबत टाइम। लेमन सोडा, नींबू सोडा, सोडा शरबत, ऑरेंज फ्लेवर।
Cheers. So finally it is shopping time. मैं कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ अपने घर के लिए और अपने दोस्तों के लिए. वीडियो ना बहुत घूम रहे हैं. शॉपिंग करते करते बहुत घूम लिए. कुछ मिला नहीं अभी तक. जो हम लोग को चाहिए वो मिला नहीं. अभी मिलता है. अभी मिलेगा. Shopping done. എൻ്റെ വീട് बहुत ट्रैफिक है. ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है शाम के टाइम पे. सो वी जस्ट स्टॉप्ड 5-10 मिनट का ब्रेक एंड देन वी लीव. So after coming to Kerala, this might be the second time I will meet a few of my subscribers. I'm nervous though, but they're waiting for us. Yeah, they're waiting for us. मिलते हैं. And I'm a little nervous right now. Officially crossed 200 subscribers today. It was 200 in the morning. Right now it's 2:26 and a subscriber wants to be in the vlog. എല്ലാരും ഇവിടെ We are home.